हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो बच्चों, हमने ऑलरेडी वर्क एंड एनर्जी चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वर्क होता क्या है, टाइप्स ऑफ वर्क डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी ऑल हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियो। तो ये वीडियो देखने से पहले इसका जो पहला लेक्चर है उसको देखिए, उसके बाद आज का ये सेकंड लेक्चर है। आप इसको अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को जो वर्क एंड एनर्जी है, ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों। तो जो हमने पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने वर्क के बारे में कंप्लीटली डिस्कस किया था। अब इस वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और फ्यू डेरिवेशंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एंड लास्ट आपका जो टॉपिक होगा पावर। ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ 3 या 4 वीडियोस में पूरा टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So this is what we all have discussed. What is work? What is the formula for work? So W is equal to force into displacement. We have already discussed types of work done: positive work, negative work, zero work. So now in this class we are going to discuss about the introduction of energy. Okay. So energy is a fundamental quantity that is neither created nor destroyed. It can only transfer from one form to another form. In simpler term, it is the capacity to do work. Okay. So, okay. So energy is a fundamental quantity that is neither created nor destroyed. So energy is the capability of doing work. So in simple terms, if you want to define what is energy, energy is the capability of doing work. Energy is the capacity of doing work. So how much work we can do, for that work done we need some amount of energy. Okay, so energy and work done both are equivalent to each other. So in simple statement we can say the amount of work done we do, for doing such work, that amount of work done, we need that amount of energy. In other words, we can say if we consume that amount of energy, we can do that amount of work. So work and energy both are equivalent to each other. तो बच्चों, जितना काम करेंगे उतना एनर्जी कंज्यूम होगा, या जितना एनर्जी हम कंज्यूम करेंगे उतना काम होगा. सो वर्क एंड एनर्जी बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. तो दोनों फिजिकल क्वांटिटी लगभग सेम होते हैं, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं. ओके, दोनों का ऐसा यूनिट होता है जूल. प्लीज remember that work and energy are two such physical quantities having same SI unit. Okay, and here the other statement is written that energy cannot be created nor destroyed. So there is a conservation statement of energy which is universal, that is the energy cannot be created or destroyed. So the total energy of this universe always remains constant. So what is the use of energy then? So energy can be transformed from one form to other form, but the amount of energy never get destroyed. तो ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है बच्चों. जैसे इसके कई सारे एग्जांपल्स है. अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है हीट एनर्जी में, जो हम इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो सकता है लाइट एनर्जी में, जो बल्ब में हम लोग यूज करते हैं. ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, all the different forms of energy which we use in our different purposes. Okay, so coming back to the types of energy, there are so many different forms of energy. The first one is sound energy. Sound energy is associated with sound wave. What is sound wave?
The sound wave is produced due to the vibration, due to the vibration. So any object which vibrate to produce sound, and the energy possessed by an object due to the vibration is called sound energy. The energy transferred due, now coming to heat energy. What is heat energy? The energy transferred due to the temperature. If the temperature of an object increases, it produces the heat energy. So heat energy basically related with the temperature. Next, coming to the light energy. What is light energy? Light energy is a type of electromagnetic waves. Light energy is associated with electromagnetic waves. Now, what are the electromagnetic waves? The waves basically doesn't require any particular medium. It's called electromagnetic wave. Next is our electrical energy. Energy associated with the flow of charge. Now, coming to the magnetic energy. The energy associated with the magnetic field. When the energy associated with the magnetic field of a magnet, that is called magnetic energy. And always remember, these all forms of energy are interconvertible. We can convert the heat energy to sound energy to light energy to electrical energy. So many forms of interconversion are there. Okay. So now coming to the main topic of this chapter, that is kinetic energy. So before going to this topic, let me tell you, there is a type of energy called mechanical energy. So mechanical energy is a type of energy which is produced by virtue of the state of an object. There are two possible state of an object, that is rest and motion. So if any object is in rest, that also object possesses some amount of energy. If any object is in motion, that also the object possesses some amount of energy. Okay, so this is called mechanical energy. Now this mechanical energy are of two types, that is kinetic energy, and another one is potential energy. So let us discuss one by one. So what is kinetic energy? Kinetic energy, okay, one thing I forgot to tell, I guess, the SI unit of energy is joule. The SI unit of energy is joule, and it is a scalar quantity. Please remember these two statements. Okay. Now kinetic energy. This is the energy possessed by an object due to its motion. Okay. तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा, कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर कुछ एनर्जी होते हैं, और ये जो एनर्जी होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इतना तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बच्चों, कोई भी चीज जब बहुत तेज मूव करता है या मूव करता है तो वो कुछ काम कर सकता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एक बुलेट की, बुलेट जब मूव करता है बच्चों, बहुत तेजी से मूव करता है, उसका स्पीड जो होता है लगभग बहुत हाई होता है। सो ड्यू टू द हाई स्पीड इट पोजेस हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी ये किसी को स्ट्राइक करता है, इसलिए इतना एनर्जी ज्यादा होता है कि ये किसी के आर पार भी जा सकता है। तो कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है। Next, coming to potential energy. So what is potential energy? The energy stored in an object due to its position or configuration. अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेट हो, किसकी वजह से? ड्यू टू इट्स पोजिशन और हाइट फ्रॉम द सरफेस and its configuration. So if we take, so many examples are there. When we keep or lift a hammer to beat a iron nail, that hammer possesses some amount of energy. That energy is nothing but the potential energy. So
how this this hammer can does some work. When the hammer is reached from the ground, potential energy is generated inside the hammer. Now when we strike the hammer on the nail, the amount of energy that produced in the hammer get transferred to the nail, and it can move the iron nail. At the same time, when we stretch a rubber band, it produces some amount of energy that is called elastic potential energy. When a spring is stretched, it also produces some amount of energy that is called elastic potential energy.